पहला पार्ट क्या है? कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये चैप्टर 7 है, उसको मल्टीपल सेगमेंट्स में ब्रेक किया हुआ है मैंने। तो पहले सेगमेंट में हम अंडरस्टैंड करेंगे मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। As per the Keynesian theory of macroeconomics, we can understand the equation between the national income and the state of employment in an economy during a particular period of time using the components of AD and AS. A relationship between the nation's income and the level of employment. कह रहे भाई साहब नेशन की इनकम तो बढ़ती जा रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है, ग्रो कर रही है इकोनॉमी। कह रहे हाँ, अच्छी बात होती, अच्छी बात होती अगर साइमल्टेनियसली लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े। तो कह रहे एक बार वो भी चेक कर लेते हैं कि हमारा नेशन इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। जीडीपी बढ़ना, इट इज नॉट, जीडीपी इज नॉट अ ट्रू मेजर ऑफ वेलफेयर, जीडीपी इज नॉट अ ट्रू मेजर ऑफ वेलफेयर। तो हमें इक्विलिब्रियम, जीडीपी ग्रो करना जरूरी नहीं है कि हम इक्विलिब्रियम अटेन करने के और करीब जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे हैं, वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कैसे। दिस एस्पेक्ट विल बी लुक्ड इनटू मोर डिटेल्स इन द नेक्स्ट चैप्टर। अभी मैंने बताया ना कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कह रहा है इक्विलिब्रियम पे हम फोकस कर पाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि नेशन इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है। कह रहे पहले हम अंडरस्टैंड तो कर लें कि एडी का मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, कंजम्पशन क्या है, सेविंग्स क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। These concepts also help us to be able to understand the relationship between consumption, saving, and investment with the levels of income over a period of time. In this segment, we will be understanding the concepts of aggregate demand and aggregate supply in greater detail. The following segments will unpack other related key concepts. मतलब we will not just be focusing on aggregate demand and aggregate supply, और चीजें भी आएंगी। कंजम्पशन क्या होता है, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है, एमपीसी क्या होता है, एपीएस क्या होता है, एमपीएस क्या होता है। बहुत मजेदार है, बहुत बहुत इजी है, बहुत इजी है, प्लीज मुश्किल नहीं है। बट मेरे को ये समझ नहीं आएगा अगर मुझे ये दोनों नहीं आए। इंटर रिलेटेड पॉइंट, इंटर रिलेटेड है, गैप मत आने देना। कह रहे जरा हर चैप्टर के लिए ये बोल देते हो। 20 मिनट्स पर डे की एवरेज चाहिए बस, इससे ज्यादा नहीं मांग रहा। 20 मिनट्स पर डे की रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, 20 मिनट्स पर डे की एवरेज चाहिए। जितना आप रिवाइज करते जाएंगे ना, 100% कवरेज रहेगी। उसके बाद आपकी मर्जी है, वो तो मैंने एक मिनिमम रिक्वायरमेंट बोल दी ना, आपको एक दिन में खत्म करना है बढ़ा दो, लेकिन जस्ट टू स्टे एट पार मुझे सिर्फ 20 मिनट्स 30 मिनट्स की एवरेज चाहिए। okay? इससे ज्यादा नहीं मांग रहा। एग्रीगेट डिमांड, AD refers to the total value of final goods and services which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income. Individual demand, it is the number of units of a commodity which a consumer is willing to buy. Willingness, that is the similarity. Here also we are studying the willingness, but not of the individual consumer for a particular commodity. Here, the total value of final goods and services, all the goods and services, which all the sectors, primary, secondary, tertiary, individual, household, firms, sub, government, external sector. फिर हम देखेंगे assumptions हमारी कि we are studying only in a 2-sector economy. That will follow. So, but what is aggregate demand? It refers to the total value of all the final goods and services which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of one accounting year. In other words, AD is the aggregate expenditure that different sectors of the economy are willing to incur during a given period of time. It means AD and aggregate expenditure are the same. कह रहा है aggregate demand और aggregate expenditure एक ही बात है. It is the total value of final goods and services which all the sectors of an economy are willing to buy during a given period of time, which is usually 1 year.
which is usually 1 year. It is important to note that aggregate expenditure refers to the planned expenditure which the consumers, all the sectors are planning to. Willingness, we are studying the willingness, planned expenditure and not the actual expenditure. So AD is the total expenditure that all the households, firms, all the sectors are planning to incur. Planning means willingness. हम willingness study कर, हम क्या study कर रहे हैं? Willingness, not the actual picture. Actually क्या हो रहा है वो नहीं study कर रहे, willingness study कर रहे. AD is a flow concept over a period of time, for the year, for the month, as it is generally measured for a period of accounting year. Difference between aggregate demand and market demand मैं आपको already बता ही चुका हूँ. Aggregate demand is by all the sectors for all the goods and services. Market demand is for a particular, it is for by all the individuals, but for a particular commodity. Market demand is studied for a particular commodity, one commodity at a time. Market demand for mobile phones, market demand for laptops, market demand for table, कुछ भी commodity. Market demand for shoes, a particular commodity, one commodity at a time. Aggregate demand for all the final goods and services. Aggregate demand is the total demand for all the goods and services, whereas the market demand is for a particular commodity.